Good morning, everyone. We are off to Brussels today. We have our train from the central station in Cologne, and this is 7:25 right now. There's nobody on the bridge. It looks really pretty. We are on time. Next up, Brussels Central. Okay, that's our stop. Breakfast in Belgium, yogurt and focaccia bread. Looks yummy, so let's dig in. फाइनली हम लोग नाश्ता वाश्ता करके निकल गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल, क्या बोलते हैं, Grand place. सेंट्रल ग्रैंड प्लेस। हम लोग पता नहीं है वो खुला रहेगा या बंद रहेगा, बट वहीं पे जाके देखते हैं। हम लोग आए हैं एक सुवेनियर शॉप में। We are just looking around. बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। They beer mugs and even like you can use the coffee cups. This is the one we've selected. दिल्ली की सर्दियों से बचाने के लिए मॉम देखो आपके लिए क्या लें। तो हम लोगों ने अभी थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग कर ली है और अभी हम लोग आ गए हैं सेंट्रल एरिया में, जहाँ पे बहुत सुंदर स्क्वायर है। सो आप देखो ज़रा कितना सुंदर है यार। The square where I'm standing is called the Grand Place, and it is really popular in Brazil. It's the city center. You can see a lot of beautiful buildings around. So it has three kinds of buildings. The guild houses, that is the houses of the wealthy, opulent families who control the economic wealth of Brazil in the medieval times, and the amazing city hall with the tower. और यहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं, लाइक क्रिसमस टाइम पे इवेंट्स हो रहे हैं या फिर कोई रॉक कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। Apart from Belgian fries, what is also popular is Belgian waffle, and that's why we have come to Maison d'Andoy, which is a very popular place to try the waffle. Very tempting. Let's go. It's very crowded. Yeah, now I'll order in French, just like Key and Peele. Chant. And start with that. Bonjour, monsieur. Well done, Belgium. So behind me, you see a huge crowd. It's because it's the Mannequin Press over there. It's actually a statue of a naked boy pissing in the fountain. And that's very symbolic of Brazil and Belgium in total. This statue has been stolen multiple times. While the original one was made in 1619, but this is a replica of it, which was made in 1965, and the original one is kept in the museum. The पीछे एक store है Belgian fries और Fritz का, which is called La Petite. I think it's very popular in here. यहाँ पे बहुत सारी chains हैं इसके। तो Belgian fries और actual American French fries में difference ये होता है कि Belgian fries are much thicker and they are not as flimsy as the American version. And Belgian fries are fried in buffalo tallow, which is an animal fat. So I'm vegetarian and I'm not going to have it. Just as FYI, in case you're vegetarian as well. So next we stopped by a Belgian chocolate store. उसका नाम Pelican था. And the moment we stepped in, yeah, we were really hit by this chocolate aroma. It was like walking into a chocolate dream. और हर पीस इतना beautifully artistically बनाया हुआ था, बहुत ही tasty. Loved it. Belgium में आके Belgium chocolates try नहीं किया तो क्या किया? Belgium is quite culturally rich.
And you can notice it on the streets as well. ऐसे ही चलते चलते we got transported into this Belgium comic series. Of course, it's the Belgium hero Tintin. Augie was the brilliant mind behind creating Tintin. वहाँ हमने देखे action figures Tintin and other characters के, और उसकी iconic spike costume में Tintin, and उसकी car, और इतनी सारी memories, सब कुछ recollect हो रहा था. I hope आपको भी recall हो रहा होगा अपने childhood memories. You're going to see mini Europe in Mercedes-Benz. यहाँ हल्का हल्का ड्रिजल शुरू हो गया है. वैसे वेदर फोरकास्ट के हिसाब से शाम को बारिश होगी, ऑलरेडी ये पता था, बट अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है. हम आ गए हैं यहाँ के पॉपुलर मिनी यूरोप में. हमने टिकट्स लिए मिनी यूरोप, और यहीं से ही एटोमियम के भी टिकट्स मिल जाते हैं, विच कॉस्टेड अस आई थिंक 32 euros each. Every country's exhibit, you'll notice a push button, and this one is for Walibi, where there's a giant wheel which is very popular. If I press this, you can see the wheel rotating. मुझे बचपन में बहुत अच्छा लगता था ऐसे टॉय कार्स और एक ट्रैक हो. I had one. I had to make the track, and then there was a miniature train around the city. पर बहुत पहले में अच्छे से याद नहीं. I love these. Oh yeah, no, that's okay. Oh no, the princess. Smoke only, no fire. मेरे पीछे है एटोमियम. बेसिकली ये ब्रिसल्स से सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है, एंड ये एक्सपो 98 में यहाँ पे एक्सपो हुआ था बेल्जियम में. तो वहाँ उस टाइम पे बनवाया गया था ये, और तब से हटाया ही नहीं, तोड़ा ही नहीं. बट इट वाज सपोज टू बी डिमोलिश्ड, बट वो किया नहीं इन्होंने, और अब ये बहुत फेमस है. We are entering into one of the spheres of Atomium. This is the first sphere in Atomium, where everything about the history of the Atomium, which starts from 1958, is mentioned here. All the articles, the newspaper cuttings, and some videos as well from that time.